Hi everyone. Um, Thank you everyone for coming today. This is the problem of being a little short. Can everyone hear me? I'm going to read poems from my recently published book. It's called Firefly Memories. I, I write about looking for a place one can call home, migration, a sense of belonging, migrants. And I write mostly in English, but I'm Bengali by origin, so I mix a bit of Bengali. My first poem that I'll read today is called Kaman Acho Shop Teek, which means how are you? Is everything okay? This is inspired by an area in New Delhi called CR Park. CR Park used to be called East Pakistan Displaced People Colony. It was a refugee area meant for people who came from East Pakistan. And a branch of my family actually came from there. So the first poem is about that. Kaman Acho, Shop Teek. This was a refugee market once, and now, more than 50 years after they were displaced, the red and white saris, the Desh magazines, the Nolen Gur Shondesh dot the shops, proclaiming the Bangla majority on the pavements and the streets. Yet, at the corner, the tarpaulin-covered fish market spatters with mackerel from Karnataka and pomfret from Maharashtra. The kite-like bodies quivering the ice underneath. The fishermen pull out black thread-like veins from the brownish-gray jumbo prawns from Orissa. Eta bish, bujle didi, while the shovel-like rohus are haggled over mostly by the Bengalis. Ekhankar lok prefer boneless fish such as surmai, sneers Dulal's grandson. As if not wanting to search for flesh, tearing through thousands of needle bones reflects a lack in the people who belong here, the here that remains different from home. Dulal's shop is the oldest, 40 years and more, and the only shop with the Ekhane Bangladesher Podda Ilish Pawa Jay sign. Grandfather would have bought the Ilish, not wincing at the 1200 rupees per kilogram price. A true Bengali doesn't count money when buying Ilish, he used to say. But grandfather is gone, and so is Dulal. Now his grandson jots down the day's purchases in a notebook that seems to reflect the blood of the fish dripping down the tables into the water tanks under them. I buy my usual Sunday stock, 250 grams of rohu and 250 grams of the silverfish resembling morella, and nod at Dulal's grandson, Ashi. There is no word for goodbye in Bangla. Instead, I tell him I will visit again. I'm already dreaming of marinating the fish pieces in salt and turmeric and frying them crisp in smoky mustard oil, the simplest of recipes that has traveled down from grandfather to me the same way he did from Burma to Bangladesh to India, just like these fish. The next poem is inspired by my travels. So this book is a mix of personal and political and travel journey stories. This is based on a place called Alhambra, which is used to be designed. It was a part of the Caliphate reign. So it's about the Alhambra Palace, which the Christian king
Palace. The line outside the Nasrid Palace curved up to the palace of Charles V, who in 1526, newly anointed king and husband, decided to build a palace to rival the Alhambra, a book of stone with a sheen that could gild pearls. Alas for Charles, his triumphal arch remained an empty shell, while the Moors, driven out by his grandparents, kings and queens, buried in chapels built on what were once mosques, lamented their lost home, with its trees of paradise, the 12-cornered marble pool resting on 12 lions, the tiles, the stucco, the beehive carvings, the colored gas tiles, all reflected in the still waters of the U-shaped pools, lined by cypress trees and myrtle bushes. Outside, tours of the Albayzin quarters navigate the cobbled courtyards and promote the Arabic way of life in homes lived in by people of unknown origin today. And the last poem is dedicated to my father. I lost him very recently. He actually named me Jonaki. Jonaki means firefly in Bengali. So the title of the poem is Fireflies. At 13, banished from home, he learned not to trust. Brilliant, he doubted his brilliance and crept downstairs to grab exam results in the newspaper before others. To no one's surprise but his, he had topped the university. That was the pattern of his childhood. Adult, he learned to cook. Onions are done when pale cockroach color, and continued to study rocks, granite, mica, basalt, igneous, anthracite, crystalline, annealed, or molten. They were all diamonds to him. Sinking into their impervious depths, he could ignore the insults, the Berkeley riots, the marches for civil rights. A brief love for JFK was sniped short. Never care or trust too much. It hurts. Deep within, the lonely, frightened, wistful, hopeful boy remained. A love of poetry, of theater endured. Perhaps that is why he dreamed of fireflies lighting the night and named me one. Thank you. That was beautiful. Thank you so much, Jonaki. Next, we have Anita Aujayeb, a long-standing educator, writer, poet, historian, and chairperson of the President's Fund for Creative Writing, Ministry of Arts and Cultural Heritage in Mauritius. Anita is from Mauritius, like I just mentioned, a country that is truly a confluence of cultures, diverse and rich in languages, ethnicities, religions, and ways of living. And it is therefore no wonder that she can speak and write in several languages, including English, French, Hindi, Bhojpuri, and the local dialect Creole. Also, Anita holds a PhD in English from Banasthali University here in Jaipur, and she is immensely happy to return to this wonderful city. Over to you, Anita. Thank you, Anisha. As she has mentioned, I'll briefly say about my country. Some 200 years back, some people of India were tricked ruthlessly by the Britishers and sent to islands to work the soil and to make the country prosper for their own good. People from India were sent to islands like Mauritius, Fiji, Guyana, Suriname, Trinidad, and so many other places, where they endured so much, yet they made the country heavenly.
and I'm from one of them. I'm from Mauritius. I will read a poem which I wrote for the Independence Day of Mauritius, and it is entitled, "This is My Country, Mauritius." And it is from one of my books, Mauritius in Rhythms, which I have written, the history of Mauritius in verse and in prose. Yes, this was, this is, this will be my lovely, tiny, attractive country, where people for Diwali enjoy gato patat. It's a typical cake made by Hindus for Diwali. While for Spring Festival, we eat gato cravat. This is another typical of the Chinese cuisine. We relish Gâteau Marie on Assumption Day. Christians are used to give Gâteau Marie to everyone on the Assumption Day. Waiting for Sevai on Eid come on a tray. When the Kawar merges with the Kavadi. So here you see all the multilingualism, multiracial, multicultural country that I come from. North India meets the South in all solemnity. East meets West. The soil knows no rest. While plowing, tilling, sowing, and harvesting, a bus trip from the north to the capital gives an air of fancy dress carnival. With the Hindu in sari or dhoti wrapped, the Muslims bearded face and cap, the Creole dressed in Western style, the Chinese unending talk and smile. Happily join in this fatherland, but not forgetting ancestors and their motherland, that is India. Keeping cultures all, traditions all, life goes on. Once it was survival, now pleasurable, more and more enjoyable, as blow winds favorable towards development, towards progress gradually. Yes, this was, this is, and this will be my only refuge, my only country to love, to cherish, to sing its glory. I will read another poem from my latest book entitled The Last Pilgrimage. I don't know why I chose this title, The Last Pilgrimage. And the poem is based mostly on a Hindu bride. You know, in Mauritius, we have all the rituals that are done in India, and all these rituals, combined with other rituals, make a festival, a marriage, a very grand thing, something memorable. But there is the girl who is sitting there and going to her husband's place. Where does she stand? I call it a no man's land. Because from one house, she has been put out. I don't want to be cruel, but that's the cruelty in there that I could feel. You are put out of your parents' house, and you are being sent to another man's place whose doors are not yet open for you. What do you do in such a circumstance? From one closed door to another not yet opened. The unending rituals took time, unending. Some overfed guests had left, others were leaving. Under heavy jewelry and heavier bridal outfit, tears mixing up all colors of the flashy cosmetic, the meek bride got into the decorated carriage, all shivering with so many mixed feelings for the voyage. One door was now closed. Where was the destination? The paternal house was going out of sight.
Kith and kin all lengthily waving goodbye with sighs. The excessively well-treated Bharat party looked so distressed, so abnormally happy. The feeling was one of a fulfilled mission to be taking the bride to their mansion. One door was now closed, but where was the destination? She could not lift the head. The weight prevented from now only not to rise, but stay dominated. The necklaces innumerable, the earrings heavy, brought the eyes to stay down automatically. Multicolored heavy bangles made the hands go down. Looking at her feet in golden mehendi and brown, one door was now closed. Was there then a destination? Her childhood and adolescence at the backside, her future unknown, embroiled by this state surprised, her dreams, her wishes, her frocks all went sad. As she went all draped in heaviness myriad, the paternal house had closed its doors. The next door looked so far, unopened. One door was now closed. Was the unopened her destination? When she was crying, everyone was dancing. While she sighed, everyone laughed unceasing. Onlookers watched the bridal convoy. A crying bride brought so much joy. Leaves were shaken, petals were strewn all along. She could see only the way which looked so long. One door was closed. Was the unopened her destination? Call it destiny, call it fate, or call it life. This was a bride's destiny, her destination in strife. Fate told her not to look back, as no exit was there. Open the unopened and make the world aware. That is your strength, your life share, your abode. Forget not to sow a smiling rainbow along the winding road. One door is closed, the unopened one is your destination. Good luck to all of you. Thank you for your attention. Thank you so much. Next we have Badri Narayan, who is an eminent poet, social historian, and a cultural anthropologist. He is the recipient of the Sahitya Academy Award 2022 for his notable poetry collection, Tumri Ke Shabd. His poems have been put into prominent films and web series, including the recently released thriller The Hard, starring Vijay Varma and Sonakshi Sinha. Sir? So if you'd like to sit and read, that's fine as well. If you'd like to sit and read. Thank you, Anisha. Thank you, JLF, for inviting us to recite our poem here. It's a very rare opportunity. So you are listening the various sounds of various kinds of poetry, and I'm going to read Hindi poetry. So translation नहीं करेंगे, हिंदी में सुनाएंगे. The छोटी कविताएं एक दो और फिर दो थोड़ी बड़ी 6 मिनट में हम ख़त्म करेंगे. पहली कविता माँ का गीत. पहचान में माँ का गीत. अगर तू सूर्य होता तो दिन भर आसमान में जलता रहता. अगर तू चांद होता तो पूर्णिमा से एकम तक तुझे रोज रोज कसाई के कत्ते से कटना पड़ता. अगर तू तारा होता मेरे लाल तो मुझसे कितना दूर होता. अच्छा हुआ तू बद्री नारायण हुआ. Second very small poem. पहचान में विदा. Name of the poem is विदा. पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन किसको विदा करने आया है. पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन किसको विदा करने आया है. दोनों अत्यंत आकर्षक थे, अत्यंत आधुनिक, पर उनमें एक बात प्राचीन थी कि दोनों रो रहे थे. दोनों रो रहे थे. अब थोड़ी सी बड़ी कविता. न जाने क्या हुआ कविता का शीर्षक है.
न जाने क्या हुआ, कल एक राजा नींद में चिल्ला उठा, मंत्रियों मुझे लोक गाथाओं में जगह चाहिए। मंत्रियों मुझे लोक गाथाओं में जगह चाहिए। चिंतित हुए सारे मंत्री अधिकारी हैरान, जिसके पास पुलिस है, असंख्य सेना है, जल दुर्ग थल दुर्ग जिसके पास 64 किले हैं, उस राजा को क्या जरूरत पड़ी लोक गाथाओं में जगह के लिए? उस राजा को क्या जरूरत पड़ी लोक गाथाओं में जगह के लिए? हुआ गहन विचार, शब्द सत्ता, स्मृतियां, मिथक, गाथा, पुराण, पुरखे, पुरोहित, ओम ओम ब्रह्म ज्ञान, सबको आमंत्रित किया गया। सब सुने, सब सोच में पड़ गए। सब सुने, सब सोच में पड़ गए। इस राजा के लिए लोक गाथाओं में कैसे जगह बनाई जाए? चलो यह बात किसी मदारी से जानी जाए। चलो यह राज किसी मदारी से जानी जाए। न जाने कहाँ से पकड़ एक बाजीगर बुलाया गया, उसे सारी स्थितियों से अवगत कराया गया। सब सुन हंसा मदारी, यह लो, अब राजा को भी लोक गाथाओं में जगह चाहिए। राजा को भी लोक गाथाओं में जगह चाहिए। जगह भी वहाँ जहाँ लोक गाथाओं में नायक बैठते हैं। जगह भी वहाँ जहाँ लोक गाथाओं में नायक बैठते हैं। अचानक वह हुआ गंभीर, फिर पूछा, कवियों से बात की? नहीं। लेखकों से बात की? नहीं। गाँवों में जिन बूढ़ी औरतों की आंखों में डूबता है सूरज, उन बूढ़ी औरतों से बात की? नहीं। तो मूर्खों, राजा के लिए किस तरह और कैसे जगह बनाओगे लोक गाथाओं में? राजा के लिए कैसे जगह बनाओगे लोक गाथाओं में? इसके लिए चिड़ियों, पेड़ों और गलियों से बात करनी होगी। हवा को समझाना होगा, पानी को मनाना होगा, बीजों को कहीं ले जाकर धीमे से बुझाना होगा। इतने पर भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि राजा को मरना होगा। अब अंतिम कविता है, ये बेगमपुरा एक्सप्रेस। एक बेगमपुरा एक्सप्रेस चलती है पंजाब से, हर साल बनारस आती है रविदास के मेले में। उसमें लाखों लोग आते हैं और वो दर्शन करते हैं वहाँ। तो ये शीर्षक है बेगमपुरा एक्सप्रेस। अमरपुर से बेगमपुरा तक चलती है एक ट्रेन, बेगमपुरा एक्सप्रेस। सुबह 5:10 पर, बिल्कुल ब्रह्म वेला में। टिकट काउंटर पर बैठा है क्लर्क टिकट लेकर। कहते हैं कि पैसे से मिल जाता है सब कुछ, पर लोग हाथ में लिए खड़े हैं पैसे, रुपए व एटीएम कार्ड। टिकट बाबू फिर भी टिकट नहीं देता। टिकट बाबू फिर भी टिकट नहीं देता। कत्ली, खूनी, बलात्कारी, बेईमान, चालू, फ्रॉड, लंपट, हिंसक, झूठ, बवाली, सुल्तान, साहेब, मालिक, इन सबको नहीं मिलेगा टिकट। इन सबको नहीं मिलेगा टिकट। दंभी कवि, सत्ता के बौद्धिक, सब खड़े रह जाएंगे और नहीं मिलेगा उन्हें इस ट्रेन का टिकट। टिकट बाबू अगर इन्हें बेचना भी चाहेगा तो उसके हाथ बेकार हो जाएंगे। जो 2.5 आखर जानता होगा वही पाएगा टिकट। जो 2.5 आखर जानता होगा वही बेचेगा टिकट। जो 2.5 आखर जानता होगा वही पाएगा टिकट। लहरों से आए तारों को, कोमल मन सुकुमारों को, सराय के मालिकों को तो नहीं, पर सराय में रुकने वालों को मिल जाएगी टिकट। टिकट बाबू सोना ले लो, चांदी ले लो, मुहरे और मोती ले लो, पर दे दो मुझे टिकट। कई दशकों से मैंने कोई यात्रा नहीं की है, मैं जाना चाहता हूँ बेगमपुरा। ट्रेन खुलने लगी है, हरे पंछी पेड़ से उड़ने लगे हैं। ट्रेन में घाना बैठे हैं, पीपा बैठे हैं सेना नाई। ट्रेन खुलने लगी है, ट्रेन खुलने लगी है, ट्रेन खुलने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
Okay. Thank you, Badri ji. Okay, next we have Professor Sarbjot Singh Bail. He's a former Dean Academic Affairs at Guru Nanak Dev University in Amritsar. He's an architect by training and he was a teacher at the School of Architecture and Planning, and he writes powerful poetry in Punjabi, and he will be reading for us in Punjabi. ठीक है, थैंक यू। सो मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने लोगों को पंजाबी समझ में आती है, लेकिन आई टेक इट इफ़ यू कैन डांस टू द पंजाबी ट्यून्स यू कैन अंडरस्टैंड पंजाबी पोइट्री ऑल्सो। आई विल गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम। ये लिखी गई थी जो सेंटेनरी ईयर था जलियांवाला बाग का 2019 में, तब ये लिखी गई थी। और इसमें आप अगर कहीं आई टेक इट अगेन, मोस्ट ऑफ़ यू वुड हैव विजिटेड जलियांवाला बाग, आप गए होंगे और आपने वहाँ पे देखा होगा कि अभी भी उन्होंने जो वहाँ पे गोलियों के निशान हैं वो अभी संभाल के रखे हुए हैं, और कहीं कहीं पे अभी भी कोई एक आध गोली किसी दीवार में आपको धंसी हुई मिल जाएगी। तो ये जो नज़्म है, ये नज़्म या नसर है, ये मुझे पता नहीं, आप फैसला कीजिएगा कि एक तरह का नैरेटिव है, लेकिन ये नैरेटिव जो है ये it is an eyewitness account of that bullet which is still stuck up there in one of the walls of Jallianwala Bagh. इस नज़्म का टाइटल है तैंकी दर्द ना आया, डोंट यू फील द पेन। मैं जलियांवाले बाग दी खब्बी नुकरे लगी कंध च चिणी, नानक शाही इट ते वज्जी गोली हाँ। नानक शाही ईंट एक पुरानी ईंट होती है जो हम पुराने शहरों में यूज़ करते हैं, बड़ी पतली सी ईंट होती है और उसको कहा जाता है नानक शाही ईंट। बाबा नानक के उसके नाम के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। मैं जलियांवाले बाग दी खब्बी नुकरे लगी कंध च चिणी, नानक शाही इट ते वज्जी गोली हाँ। मैं किस बंदूक दी नाल चों निकली, किस गौले बंदूक दा घोड़ा दबिया, मैनू याद नहीं, पर याद है मैनू तंग गली नूं डक के खलोता तंग दिल हाकम डायर, ते ओदे हलक चों निकलिया फरमान नादिर शाही फरमान फायर। ते मैं दागी गई निर्दोषां निहत्थियां निगूणियां वल। हर गोली दी नोक ते एक ना हुंदा है, अणजाणिया अणबुझिया अणमिथ्या। हर गोली दे सीने च एक सिरनावा हुंदा है, जाणिया बुझिया मिथ्या मौत। मैं कर्मा वाली कर कारतूस नूं खाली, बचदी बचाउंदी चौड़ियां हिक्कां तो, कूड़ियां छातियां तो, रोशन मथियां तो, कंबदियां कुखां तो जा वज्जी जलियांवाले बाग दी खब्बी नुकरे लगी शहीदी खूह दी कंध च। मैं नानक शाही इट नाल टकराई, विचों नानक शाह फकीर दी कुरलाहट आई, तैंकी दर्द ना आया। मैं क्या बाबा मैं तो गोली हाँ, मैं तो गोली हाँ, अन्नी गूंगी बोली हाँ। मैनू दागण वाले दागी ने तेरे ही रब दे जाए, राजे शी मुकद्दम कुत्ते हलकाए। बाबे दे बोल गोलियां दी गूंज च अणगौले रह गए। गोलियां बेशुमार सी, बंदे कुछ हज़ार सी, धड़ धड़ा धड़ डिग रहे सन, लहू भिजी जमीन तो पैर तिलक रहे सन। मेरे पिछे अन्ना खूह सी, मेरे पिछे अन्ना खूह सी, जिस विच छालां मारदियां मावां दी कुछड़ बच्चे विलक रहे सन। मैं अन्नी गूंगी बोली गोली चशमदीद गवाह हाँ, संग च घुटदियां चीखां दी, सिसकियां दी, आहां दी, ते मौत नूं सहक दे आखरी साहां दी। ते अंत च सुन मसुन सन्नाटे दी। एक सदी बीत गई है, ए लहू दे रंग च रंगी सदी,
ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਦੀ ਡੰਗੀ ਸਦੀ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਸਦੀ, ਇਹ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋਈ ਨੰਗੀ ਸਦੀ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਉਜੜਨ ਸਦਕਾ ਚਮਨ 'ਚ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਾਰ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਉਜੜਨ ਸਦਕਾ ਚਮਨ 'ਚ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਰ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਬਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਬੋੜ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਬੋੜ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵਗਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਖੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਝੱਖੜ ਝੁੱਲ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਰਹਾਏ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਖੋਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੈਣਾ, ਸੁਰੈਣਾ ਤੇ ਬਿੱਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਅੰਤਮ ਸਿਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜੱਲਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੰਜਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਜੈਕਾਰਾ ਯਲਗਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਰਛਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਰੱਤ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਉਜੜਦੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਲੁੱਟਦੀ ਪੱਤਦੀ ਸੀ। ਸਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਧਰਤ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਹਰ ਜਬਰ, ਜਨਾਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਵਕਤ, ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਲੋਥਾਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਗਿੱਧ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 67 'ਚ ਹਤੀਆ ਦੀਆਂ ਹਤਿਆਵਾਂ, 69 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਾਲੀ ਲੰਬੀ ਰਾਤ, 74 'ਚ ਵਰਲੀ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ, 80 'ਚ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, 84 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਮਸਾਏ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਗਏ ਬਲਦੇ ਟਾਇਰ। 92 'ਚ ਬੰਬੇ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਦੰਗੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖਸੁੱਟਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ। 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, 13 'ਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਟ। ਇਸ ਸਰਾਪੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਦਾਮਨ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਹੀ ਦਾਗ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੇ। और अब मंजर आज का है। अब आप जाएंगे तो जलियांवाला बाग जाके आप देखेंगे कि उसको एक पिकनिक स्पॉट की तरह बना दिया उन्होंने, तो पूरी मैमरी इरेज कर दी है उस तरह की। अब ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ, ਪੱਗਾਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਗੁਲਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਲਹੂ ਨੁੱਚੜ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੁਲਦੋਧੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਣਚੁੰਘਿਆ ਦੁੱਧ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਜਰਾਈਆਂ ਨਸ਼ਿਆਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤਲ 'ਤੇ ਪਥਰਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੌ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਗੋਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰ 'ਚ ਢਲੀ ਲਾਟ ਦੇ ਬੇਹਰਕਤ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਅ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਨ ਸਟੋਨ ਆਫ ਅ ਫਲੇਮ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਫਲੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਪੱਥਰ 'ਚ ਢਲੀ ਲਾਟ ਦੇ ਬੇਹਰਕਤ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਲਾਟਾਂ ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਢਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਭੋਏ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਪੱਬ ਪੋਲਾ ਧਰੀ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਕੀ, ਕੋਈ ਕੁਰਲਾਹਟ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਰਤਾ ਹੌਲੀ ਤੁਰੀ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਰ ਅੱਡੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਿਸਕ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਕੋਈ ਰੁਲਿਆ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਖੱਬੀ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗੀ ਕੰਧ 'ਚ ਚਿਣੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਤੇ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਅਮਿੱਟਵੀਂ ਛਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਵਹਿਸ਼ਤਾਂ, ਵਹਿਣ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਦੀ ਦਾ ਭੋਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤਾਪ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਗੋਲੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾ ਰਵਾਂਗੀ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੰਬ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਤ ਦੇ ਅਧਵਾਟੇ ਸੁੰਨ ਮਸੁੰਨ ਸਨਾਟੇ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚੋਂ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਕੀ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਿਆ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ? ਸ਼ੁਕਰ। Thank you, sir. That was very powerful. Next, we have Reena Minaria, who I'm sure a lot of you here will be are familiar with. Reena ji writes in Hindi and Rajasthani, but is renowned for her voice rooted in Rajasthani. She was awarded the 2013 Prem Yuva Lekhan Puraskar and the 2013 Marudhar Mridul Puraskar by the Rajasthan Sahitya Academy, and she'll read for us today in Hindi and Rajasthani. Please welcome. ठीक है, चलेगा। नमस्कार, राम राम। शुक्रिया JLF और आप सभी का कि आप मुझे सुनेंगे। एक मैं हिंदी और एक राजस्थानी की दो छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगी। कविता है मेरी विदाई। हमारे मतलब गांव में क्या होता है कि ढोल बजता है। जब बेटी की शादी हो जाती है और विदाई देते हैं उस समय उसका ढोल बजता है, तो कहते हैं कि तब से पिता का वहाँ से उसका रिश्ता मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है लगभग। और दूसरा ढोल पति के वहाँ से बजता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक ये मैंने लिखी है, इस पर एक छोटा सा विचार मेरे मन में आया था। विदाई। शादी की सभी रस्मों के पश्चात अंतिम रस्म शुरू हुई और वह थी मेरी विदाई। बाबा के घर से होनी थी मेरी विदाई, कुछ ही देर में बजेगा ढोल, होगी दहलीज पूजन की रस्म। मैं पूजूंगी बाबा के घर की दहलीज, महिलाएं गाएगी मंगल गीत। डोली के हाथ पकड़ेंगे रफ्तार मेरी रुलाई के साथ, ढोली के हाथ पकड़ेंगे रफ्तार मेरी रुलाई के साथ, और बजेगा ढोल मेरी विदाई का। फिर इस घर से नहीं रहेगा मेरा वह रिश्ता, जो ढोल बजने से पहले रहा होगा इस घर से, जो ढोल बजने से पहले रहा होगा इस घर से। फिर पति का घर ही मेरा घर कहा जाएगा। कांपने लगे मेरे हाथ, कलेजा बिखरने लगा, औरतें फुसफुसा रही, छोरी को सासरे जाना बड़ा अच्छा लग रहा है, आँख में एक आंसू तक नहीं। बुआ ने कान में कहा, रो छोरी रो, ऊपरी मन से ही सही पर रोने का अभिनय कर। औरतें कह रही है छोरी को सासरे जाना बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या रो लेने से नहीं छूटेगा मेरे बाबा का घर? नहीं होगी मेरी विदाई, क्या नहीं होगी? दूर मुझसे मेरी बिलखती बहनें, रोती हुई माँ और सुबकते बाबा।
नहीं करोगे मुझे दूर, क्या चली जाएगी बारात बिना दुल्हन लिए, मेरे दहाड़े मारकर रोने से बदल जाएगी रस्में, नहीं ना, तो बनी रहने दो यह गलत फहमी, तो बनी रहने दो यह गलत फहमी कि मुझे सासरे जाना बड़ा अच्छा लग रहा है। समय की सीमा को देखते हुए मैं एक छोटी सी राजस्थानी सुनाऊंगी। समय बावड़ो यानी नासमझ समय, समय बावड़ो, ओ समय बावड़ो यूं सरक जावे जाने दोरा सूं सरर सरर सरके रेत। ये समय है जो इस तरीके से सरक जाता है, चला जाता है जैसे दोरों से रेत फिसल रही है। यूं सरक जावे जाने दोरा सूं सरर सरर सरके रेत, ओ समय बावड़ो यूं पलटे जाने वायरा सागे निकल जा रेत, छिण माए इण दिशा सूं उण दिशा बिन बोलिया चढ़ी चप। समय ने कोनी बांध सक्यो कोई अजे ताईं, क्यों कर समय फिसले जाने वे मुट्ठी में रेत, और निकल जा आगे बिन बोलिया चढ़ी चप। शुक्रिया। Thank you so much, Reena ji. And finally, to end this beautiful evening, we have Dushyant. Dr. Dushyant is a film professional, screenwriter, lyricist, author, and columnist. He's written 8 books of fiction, non-fiction, and several poems, and he has 2 books of poetry translations published. His second collection of short stories is scheduled to be published and released by Penguin in 2024. Over to you, Dushyant ji. नमस्कार साथियों, शुक्रिया JLF और जैसा साहस बद्रीनारायण जी ने दिया तो मुझे लगा कि एक अलग तरह का रंग मुझे देना चाहिए। सुनो, उम्र की मटमैली चादर ओढ़कर तुम जो ज़्यादा सयानी बन रही हो ना, सुनो, उम्र की मटमैली चादर ओढ़कर तुम जो ज़्यादा सयानी बन रही हो ना, सुनो, दिल ज़िद्दी परिंदा है जिसे खूबसूरत बद्दुआ मिली है कि उसे कभी बूढ़ा नहीं होना। रूह 1000 साल की बुढ़िया है, रूह 1000 साल की बुढ़िया है जिसके दूध के दांत फिर से निकल आए हैं। सुनो, उम्र की मटमैली चादर ओढ़कर तुम जो ज़्यादा सयानी बन रही हो ना। अगली कविता जो मैं रख रहा हूँ वो तयशुदा है प्लानिंग के मुताबिक। मैं जिस जगह से हूँ वो घग्गर नदी का इलाका है, मेरा बचपन गुजरा है, तो घग्गर को लेकर मेरी कुछ कविताएं हैं। उनमें से एक कविता ये है कि मैंने घग्गर नदी के नाम एक पत्र लिख दिया है, तुम पढ़ लेना हाथ में उसका जल लेकर। अब के बरसाती दिनों में जब नदी आएगी, मेरी प्रतीक्षा के शब्द तुम्हें भिगो दें तो तुम मुझे क्षमा करना। अपनी इन आँखों का पानी घग्गर नदी के पानी से मिलने मत देना। पानी में आग लगी तो कौन बुझाएगा। काल पुरुष ने लिखे थे कुछ शब्द, तुम तक पहुँचेंगे मेरी कविता बनकर। नदी के सीने पर अंकित किए हैं मैंने, उन्हें अनुवाद मत समझना। तुम उनका गीत बनाकर अपने स्वर में गा देना। मेरी प्रतीक्षा के सघन आवेग से निकले शब्द सुनकर उस संध्या रो पड़ी थी नदी। नदी का जल स्तर यूं ही नहीं बढ़ गया है, समय मिले तो पूछना नदी से। मेरी आँख में प्रतीक्षा का सूर्य रोज डूबता था गहरे जल में। नदी का वह तट तुमसे गले लग जाए तो बुरा मत मानना। जहाँ मेरे शब्दों की सियाही क्षण भर सांस लेते हुए ठिठक गई थी। मेरी प्रतीक्षा, मिलना मुझे निद्रा के अनंतिम स्पर्श पर, स्वप्न की चौखट पर, सुदूर दक्षिण में इलायची के पहाड़ों पर, पूर्व में चाय के बागानों के बीच दीर्घ चुंबन, गंगा के घाटों पर किसी संध्या आरती के समय। अलिखित नियम है सार्वभौमिक काव्य शास्त्र का,
स्थानों वस्तुओं के नवीन नामकरण कवियों का आदि व्यसन है। घग्गर नदी का नाम प्रतीक्षा नदी कर दिया है मैंने, घग्गर नदी का नाम प्रतीक्षा नदी कर दिया है मैंने। एक छोटी कविता और घग्गर को लेकर कि सुनो मैं घग्गर लिखूंगा तुम प्यास पढ़ लेना, मैं आग लिखूंगा तुम उम्मीद पढ़ लेना, मैं मृत्यु लिखूंगा तुम प्रेम पढ़ लेना, मैं भूख लिखूंगा तुम स्वप्न पढ़ लेना, मैं सांस लिखूंगा तुम अपना नाम पढ़ लेना, मैं जीवन लिखूंगा तुम असंभव पढ़ लेना, मैं जीवन लिखूंगा तुम असंभव पढ़ लेना, मैं कुछ नहीं लिखूंगा तुम सब कुछ पढ़ लेना, तुम सब कुछ पढ़ लेना। मेरी मातृभाषा राजस्थानी है तो 4 पंक्तियों की राजस्थानी कविता का केवल सुख देने की आकांक्षा है। 4 लाइनें पहले राजस्थानी में पढ़ूंगा, फिर उनका हिंदी अनुवाद, ताकि बात पहुंच जाए। पर गए घग्गर इयां आई भाजती आई, पर गए घग्गर इयां भाजती आई, जियां आवे कोई प्रेमिका मिलन प्रेमी ने, धार काटती छोड़ न्याणो हाथ में, जियां बांध लेसी प्रेमी ने इन बार। अनुवाद है कि पिछले साल ऐसे भागती आई घग्गर जैसे आती है कोई प्रेमिका मिलने प्रेमी से, दूध दूहती छोड़कर न्याणा हाथ में, न्याणा गाय को बांधते हैं पीछे से पाँव, वो रस्सी को बोलते हैं न्याणा, वो खोला उसने क्योंकि दूध को दूह रही थी जो प्रेमिका है वो, कि पिछले साल ऐसे भागती आई घग्गर जैसे आती है कोई प्रेमिका मिलने प्रेमी से, दूध दूहती छोड़कर न्याणा हाथ में, जैसे बांध लेगी प्रेमी को इस बार, जैसे बांध लेगी प्रेमी को इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।